Hello friends, welcome back. I Vaishnavi Patil and we have started with a series in which we are completing the chapters of first unit, second unit, third and fourth. Okay, I'm here just to tell the storyline of the chapter and tell you about what exactly the paragraph or the param is trying to say. Okay, so till now we have completed this is 2.5. Okay, somehow we'll complete second unit soon possible. Okay, because this is 2.5 and we have done with the first unit. Second unit ke bhi 2.1 2 3 and 4 we have done. This is 2.5. Okay, the one who have not been through this series and one who don't know about the lectures of this series, so what you do is you first go through the first unit, then jump on the second unit, complete the first unit videos, see the storyline of each and every video. If you are getting it slow, what you do is you increase the playback speed and can listen the storyline, what it actually means. Okay, and once we complete it, what we will be doing, we'll be jumping on grammar. Clear? This is how we are going to go with the flow. Okay, once we complete the 2.5, then we'll jump on 2.6, then third unit, then fourth unit. Okay, this is how we'll complete soon possible. Okay, now what happens in this chapter we'll see. And what I mean is, like, if you don't have any kind of book with you, don't worry, I'll be reading line to line and then I'll be explaining. Okay, so that would be better for better English and better understanding. Clear? So instead of wasting more time, let's begin. Okay, so our chapter's name is Let's March. क्या नाम है आपके चैप्टर का? चैप्टर नेम इज लेट्स मार्च. कैलाश सत्यार्थी 1954 is an Indian children's rights and education advocate. क्या है वो? इंडियन चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन एडवोकेट एंड एन एक्टिविस्ट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. ठीक है, ये कौन है? पहली बात तो ये है, बच्चों के लिए काम करता है. ठीक है, वर्क फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन. Okay, he worked for children's right, for education and many other things. He is an activist, he is also an advocate. Okay, ठीक है, advocate भी है. He founded the बचपन बचाओ आंदोलन in 1980. ठीक है, he founded what? Which he founded. इनका नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी. ओके, हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? हम कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये आज भी जिंदा है, याद रखिए. Okay, please don't let him die. Okay, he is there still alive. Okay, क्योंकि many a times I have seen that it is written like 1954 to somehow date, but here only it's 19. हे भगवान. Clear? So he founded Bachpan Bachao Andolan. Okay, in 1980, and he acted to protect the right of more than 83,000 children across 144 countries. See, India is just a one country. I'm not talking about state, guys. We are talking about countries. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? We are talking about countries. Okay. दिख रहा है सबको? Yes, it's visible properly. Fine. So उन्होंने 144 countries में he has been working for children. ओके, 83,000 बच्चों को इन्होंने हेल्प किए, प्रोटेक्ट, उनके राइट को प्रोटेक्ट किया है. ही हैव प्रोटेक्टेड द राइट ऑफ मेनी चिल्ड्रंस, मोर देन 83,000 एंड नो अक्रॉस 144 कंट्रीज में इनकी हेल्प पहुंच चुकी है. ओके, तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं. वी रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ दिस पीपल who always go out of their way to help other, right? So Kailash Satyarthi is an Indian children's right and education advocate and an activist against child labor. Okay, he has been honored with many awards including Nobel Peace Prize. इन्हें Nobel Peace Prize भी मिला है. Peace Prize मिलना is very hard. Okay, but in 2024 he received the award of Nobel
पीस प्राइज, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? इन्हें नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड मिला था. क्लियर? ही रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज in 2014. He has addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. ठीक है, इन्होंने he had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. जब इन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा था, at that movement he said this speech. Okay. When he was getting Nobel Prize, at that moment, at that eve, at that occasion, he addressed this speech. Okay. My children of the world. Now here we begin. Okay. My dear children of the world, your majesties, your royal highness, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. Okay, so he have just given the greeting, to one who are present over there at that moment. Okay, greeting जैसे कि हम कहते हैं ना, whenever somebody told you to give speech in front of class or anywhere, you usually do what? Good morning, respected principal, supervisor, teachers, and all my fellow friends present over here. This is how you greet to your teacher, your principal, your supervisors, and your dear friend, right? So this is the way. This is again a very good thing to go with the hierarchy. Like when I say good morning, respected principal, principal is the first person to be respected person or higher authority in the school. Then supervisor, teachers, and all my dear friends present. So it should go with hierarchy. Okay, in the same manner, Kailash Satyarthi sir have explained or have started his speech. Okay, we'll read one more time. My dear children of the world, your majesties, your royal highnesses, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. ठीक है, so this is how you start. Clear? From this podium of peace and humanity, from this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. Okay. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom. Podium मतलब stage कह सकते हैं हम. From this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. अब ये कह रहे हैं कि ये इतनी पवित्र और शांत जगह से, इस पोडियम से मैं एक मंत्र कहना चाहूँगा. और वो मंत्र कौन सा है? What would be that mantra? What would be that mantra? Yes, come on. तो वेदास का कोई मंत्र होगा. वेद अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद, दीज आर द 4 वेद. ओके, उसमें से वेदास में से मैं कहना चाहता हूँ एक मंत्र. ऐसे कहते हैं, दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises. ठीक है, इस मंत्र में ऐसी पावर है. दिस मंत्र consists that power which helps whom? Which help the human being to come up with the humanity. Okay, this help in that case. Okay, clear? Find humanity from all man-made crises. Let's walk together. This is the main title, what it explains in the beginning. Okay, let's walk together. When we are talking about let's walk together,
let me clear out that when I'm saying that let's walk together मतलब एक साथ चलते हैं, let's move together. In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. ठीक है, जिनको पता नहीं ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, दिस इज तुम्हारा ईस्ट, दिस इज तुम्हारा वेस्ट. Now what writer is trying to say is let's walk together. हम एक साथ चलते हैं. Okay, हम बोलते ना कि will never left anyone behind. We should not. Okay, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world from east to west. कहते कि बोलते ना कि कहीं पर भी हम किसी को भी पीछे ना छोड़े. Okay, we would not left anyone behind. Clear? Who is saying this? This is said by कैलाश सत्यार्थी. जैसे हम कहते हैं ना कि like for example I am teaching in class, okay, and there are 10 students. Okay, if I give the same example, there are 10 students. Out of 10, 2 are very dumb, they are not able to understand in first take. I have to repeat it twice or thrice. Okay, now what they are saying is, अब वो क्या कह रहे हैं कि whenever this thing happen, okay, whenever this thing happen, what thing, which thing we are talking about? Two boys who are not that good in the studies, what teacher does? She left 2 and take rest 8, and she will show that I have taught everything. But the real teacher is one who will teach that 2 students who don't know anything. Yes or no? So in the same case, what Kailash Satyarthi is trying to say is, he don't want to leave anyone back. ठीक है? Sorry. He don't want to leave anyone back, right? He want to take everyone along with him, right? So कहते हैं कि इन्हें पीछे छोड़ना नहीं है, इन्हें आगे लेकर जाना है. In the pursuit of global progress, not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. Clear? Let's speak together. Let our mind come together. Learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits. All that benefits. Okay. अब कहते हैं कि हम सब एक साथ चलते. Let's speak together. Let our mind come together. एक साथ हमारा mind आ जाए. Learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all. ठीक है कि कहते हैं कि हम experience of our ancestor, let us together create knowledge for all the benefits all. ठीक है, हम एक साथ चलते आगे, हमें जो भी नॉलेज मिला है हमारे ancestor से उन्हें हम फॉलो करेंगे. ठीक है, we should follow the knowledge which we are getting from our ancestors. Okay. Clear what the writer is trying to say? We should not leave anyone back. What we should do is, instead of keeping people back, we would work together, and whatever knowledge our ancestors have gave to us, we would carry forward that to our thing. Okay, let's speak together, let our mind come together, learning from the experiences of our ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all. I bow to my late parent. When we are talking about late parents, means late parent मतलब जो अभी नहीं है प्रेजेंट में. ओके, उनके पेरेंट की डेथ हो गई वैसा. I bow to my late parents, to my motherland, India, and to the Mother Earth. With a warm heart. If what they are trying to say is, I bow to my late parents, to my motherland, India, and to the Mother Earth. Means I bow. Bow means when you
bow down your head. Okay, it is in this manner. Okay, this is the way how you bow down. Okay, with a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful face I see the God smiling. कहते हैं कि मैंने इतने आफ्टर फ्रीडम व्हेन आई जब हमें फ्रीडम मिला एट दैट मोमेंट व्हाट हैपन इज व्हेन वी गेट फ्रीडम एट दैट मोमेंट we all were free, right? Today also we are free, but there are many people after getting freedom they are not free. Clear? After getting freedom we are not free. Okay, so what writer is trying to say is when we get freedom, okay, or when real child who was been kidnapped or something like that, when he get free at that moment what happen is the first smile what the writer get is soothing. Okay, ब्यूटीफुल फेस आई सी द गॉड स्माइलिंग, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं भगवान हंस रहा है, भगवान स्माइल कर रहे हैं. ओके, I give the biggest credit of this honor to my movements Kallu Kumar, Dhoom Das and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masiha from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. Okay, clear? Now what do you understand by this thing? Now what do you understand by when it comes to what he is doing? He is giving credit and honor to the people who have helped him, who have helped these people protecting the freedom of their life. Okay, protecting the freedom and dignity. Dignity क्या होती है? Self respect. ठीक है, also known as self esteem. Clear? Freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. ठीक है, तो ये जो राइटर है वो इन सारे लोगों को क्या कर रहे हैं? थैंक कर रहे हैं. ओके, फॉर व्हाट रीजन? व्हाट इज द मेन रीजन टू थैंक? The main reason to thank is that they have helped many people or many students or children to get back to their free life. Okay, and he have specifically mentioned the name of those students. He have specifically mentioned the name of those people. Okay, so now we'll start what exactly the writer is trying to explain. My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak, and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. Okay. Now what he is saying that my journey from the great land of Lord Buddha, okay, great land, Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between. अब कहाँ से इंडिया से लेके नॉर्वे तक is the great connect between the two centers of global peace. बोलते दो सेंटर ये ग्लोबल पीस के और भाईचारा के, एंशियंट एंड मॉडर्न. ठीक है, एंशियंट एंड मॉडर्न. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. अब क्या कहते हैं कि जो नोबल कमेटी है, नोबल प्राइज जो देती है, उन कमेटी ने मुझे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए बुलाया है. रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट. मैं वो तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बिकॉज आई एम, क्योंकि बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. साउंड ऑफ साइलेंस मीन्स जो आवाज़ें दबाई जा रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, द क्राई ऑफ इनोसेंस and the face of invisibility.
I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. Okay, कहते हैं कि मैं ना यहाँ पर वो चीज़ें रिप्रेजेंट करने आया हूँ, मतलब वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो किसी को पता नहीं, जो अंधेरे में है, वो जो रो रहे बच्चे, जो जो बोलते ना कि प्रॉब्लम्स है, जो रोना है, वो जो सुनाई नहीं दे रहा, मैं उन आवाज़ों को आपको बताना चाह रहा हूँ आज, ठीक है. And the face of invisibility, I represent million of those children who are left behind, and that's why I have left. अब क्या ना, when he was speaking, when ये जब speech दे रहे थे, at that moment what happened, when he was giving speech, the thing was he kept the chair empty. For what reason? The reason behind that was the chair was being kept for the one who have not come along with the children who are today at their position. Okay, ऐसे लोगों के लिए रखा है जो हम उनके एज के साथ आगे नहीं बढ़े. ओके, और वे और सम प्रॉब्लम्स रिलेट और मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है. तो ऐसे लोगों के लिए फॉर देम द चेयर इज एम्प्टी. आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन. मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए है हूँ कि मुझे सिर्फ उनके ड्रीम और उनकी आवाज़ तुम तक पहुँचानी है और बाकी सारे जनों तक पहुँचानी है, बिकॉज दे आर ऑल आर चिल्ड्रन. ओके, क्योंकि वो सारे हमारे चिल्ड्रन हैं. गेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, आई हैव लुक इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आइज. मैंने खुद ने, ये कह रहे हैं कि मैंने खुद ने उनकी डरावनी से नहीं, डरी हुई आंखों को देखा है. मैंने बहुत अच्छे से उन्हें परखा है. ओके, I have looked into their frightened and exhausted eyes. I have held their injured bodies and felt their broken spirit. 20 years ago in the foothills of the Himalayas. ठीक है, कहते कि 20 साल पहले, ठीक है, ये भी पता है कि मैंने उनके जो इंजर्ड मतलब जो दुखती नस होती उन्हें देखा है. मैंने उन्हें बहुत टूटता हुआ देखा है. ओके, द राइटर इज ट्राइंग टू से 20 years ago in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? Okay, जब ये कहता है कि मैं जब हिमालयास के फुटहिल में था, बहुत स्किनी था मतलब बहुत पतला था, ठीक है. तब ऐसे चल रहे थे, तब ये बच्चा गया उनके पास और कहता है कि हमारी दुनिया इतनी पुअर है क्या कि मुझे सिर्फ एक टॉय और एक बुक नहीं दे सकते. तब इन्हें जो बुरा लगा था, फॉर दैट रीजन ही स्टार्टेड वर्किंग इन दिस मैनर. हु? सत्यार्थी. ओके, कैलाश सत्यार्थी. आई मीट विथ अ सुदानीज चाइल्ड सोल्जर. I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. मैंने एक, कहते हैं राइटर कहते हैं कि मैं एक सुदानीज सोल्जर से मिला था, बहुत छोटा था. ही वॉज किडनैप बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया. एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड एंड फैमिली. ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माई फॉल्ट. ठीक है, उनकी पहली ट्रेनिंग में ये कहा था कि आप आपके भाई और सारे फैमिली मेम्बर्स को मार दो, फ्रेंड्स को भी मार देना. ठीक है. In I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill whom? To kill his first and friends and family. He asked me, "What is my fault?" Okay, तो ये बच्चा किनको पूछ रहा है? कैलाश सत्यार्थी को ये पूछ रहा है कि they asked me to kill his family and friends. What is my fault that I am being the child being trained in this kind of hilarious conditions? Okay, friends, all the great religions teaches us to care of our children. Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. ठीक है. The religious text which our religion follows. Okay, there are many religion in India, so among them there are many religious who follow the book. Okay, who follow the religious book in which they have specifically mentioned about the war. They have specifically mentioned for what?
they have specifically mentioned about the written words in our religious texts that let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. ठीक है, कि बच्चों को जो चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ पर जाने दो उन्हें. ओके, कुरान में ऐसा लिखा है कि किल नॉट चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. बच्चों को पॉवर्टी के लिए मत मारना. इन महाराष्ट्र ऑल्सो one thing is very popular that the children, the small childrens are you know said that they are god. Okay, so many a times in Navratri small little girls have been praised. Okay, so it's an thinking that that small children are the soul of God. Okay, so we treat it in the same manner. Whatever things a child require, we usually give it because we say that God is asking. Okay, so this is the belief in Maharashtra. So it's up to the, it's all about what the children want. We should not avoid it and should give. Okay, friends, there is no longer no greater violence than to deny the dreams of our children. सबसे बड़ा वायलेंस वो होता है कि जो ड्रीम्स होती है बच्चों की उन्हें आप झटकारते हो, मतलब वी डू नॉट अलाउ देम टू फॉलो देयर ड्रीम. तो सबसे बड़ी भूल तो वो होती है कि यू डिडंट अलाउ योर चाइल्ड to follow, you didn't allow your child to follow the dreams. Therefore I refuse to accept that all the temples and mosques, कहते हैं कि I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dream of the children. ठीक है, therefore I refuse. कहते हैं कि सबसे बड़ा वायलेंस अगर कुछ हो तो वो वायलेंस है अगर आप आपके बच्चों को, कहते हैं ना कि जो चाहिए वो नहीं दे रहे. ओके, दैट इज द थिंग. ओके, so I refuse to accept that the temples and the mosques and churches and prayer houses have no place for the dream of our children. I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring. कहते, राइटर कहते हैं कि हमारा जो मंदिर है, टेंपल है, चर्च है, मॉस्क है, यहाँ पर अगर हमारे बच्चों के लिए उनके ड्रीम के लिए कोई जगह नहीं तो ये टेंपल या फिर ये चर्च मॉस्क होने की या फिर होना भी नहीं चाहिए. एंड इफ दे आर देयर एंड इफ दे डोंट हैव दिस क्वालिटी, दिस थिंग, इट्स ऑफ नो यूज. हु इज सेइंग? राइटर कैलाश सत्यार्थी जी इज सेइंग अबाउट दिस थिंग. ओके, I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure. कहते हैं कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि हमारा देश पुअर है. द रीजन बिहाइंड दैट इज ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम. कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ एक हफ्ते का अगर एक्सपेंडिचर हम मान लो मिलिट्री वालों का, तो पूरे बच्चे जितने भी बच्चे हैं हु आर नॉट टेकिंग देयर एजुकेशन वो सारे स्कूल में आ जाएंगे. ठीक है, सिर्फ एक वीक का कह रहे हैं कि मंथ का. वर्ल्ड इज सो व्हेन जस्ट 1 वीक, एक बोलते हैं 1 वीक का जो एक्सपेंडिचर होता है मिलिट्री वालों का, अगर वो भी तुमने सिर्फ 1 वीक के लिए रुका दिया भाई, तो पूरे सारे भारत के बच्चे अपने एजुकेशन में लग जाएंगे. ओके, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज. यहाँ पर I refuse to accept that all the laws and constitution, police and judges are unable to protect our children. ठीक है, कहते हैं कि I refuse to accept that all the laws, जो भी laws हैं, constitution है हमारी, police है, judges are unable to protect our children. कि हमारी जो constitution है, constitution को हम rule book कहते हैं इंडिया का. ठीक है, why we usually say rule book? Because whatever article, whatever laws, whatever things which are very important for the country is there in that book, and whatever is necessary for the making and breaking of the law is there in that book. Okay, clear? So for that reason constitution is known as what? Rule book.
Clear? It is known as what? Rule book. I refuse to accept that the shackles of slavery, the shackles are chain that bind. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. कहते हैं मैं इसे accept नहीं कर पाऊँगा. My only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow and develop, free to eat, sleep and see daylights, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. Okay? तो कैलाश सत्यार्थी जी के हिसाब से ऐसा है कि जो बच्चा है वो ये सब करने के लिए उसे फ्रीडम होना चाहिए और है भी. ओके, इफ समबडी इज अवॉइडिंग और not allowing for this kind of freedom, then he or she should be punished. Of course, we all think about the same. ठीक है, फ्री टू ग्रो है, डेवलप है, फ्री टू ईट है, जो खाना चाहता है वो खाने देना चाहिए उन्हें. ठीक है, स्लीप है, नींद अच्छी होनी चाहिए उनकी. ओके, डे लाइट देखना उनका राइट है. फ्री टू लाफ एंड क्राई, हंसना रोना इज अगेन द पार्ट ऑफ देयर फ्रीडम. फ्री टू प्ले एंड लर्न, फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल free to dream. I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we will never. We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child laborer by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child death. Okay, we have made progress in the last couple of decades. क्या कहते हैं, last couple of decades में हमने progress की है कि we have reduced the number of out of school children. कि हमने जो बोलते हैं ना नंबर है बच्चों के वो स्कूल में ज़्यादा बढ़ा दिए. वो क्या कम किया है, कम ये किया है कि जो बच्चे बाहर रहते थे, मोस्ट प्रोबेबली द वन हु वाज नॉट एजुकेटिंग, वी ब्रॉट दैट स्टूडेंट इनसाइड द स्कूल. वी आर नाउ एजुकेटिंग दैट पर्सन. ओके, वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर बाय अ थर्ड. ठीक है, हमने चाइल्ड लेबरर को रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर बाय थर्ड. पहले थर्ड रैंक पे थे. वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन मतलब अच्छे से खाना, न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा था, तो हमने वो रिड्यूस किया है. हमने जो माल न्यूट्रिशन, सारे बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की प्रॉमिस किया. एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियन ऑफ चाइल्ड डेथ. ठीक है, हमने बहुत सारे बच्चों को मरते हुए बचाया है. ठीक है, सो ये कौन बोल रहा है? दिस इज सेड बाय कैलाश सत्यार्थी. ओके, बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. ओके, कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी हम बहुत से चैलेंजेस फेस करेंगे, हम बहुत सी चीज़ें और भी फेस करेंगे. फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस. कहते हैं कि द बिगेस्ट चैलेंजेस और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस. वी हैव utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. कहता है कि we have utterly failed. What he is trying to do? We have utterly failed our children on imparting an education. किसके लिए फेल हुए हम? imparting an education. मतलब हमारे जो बच्चे हैं इंडियन, वी हैव अटरली फेल इन इम्पार्टिंग, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने में हम पीछे रह गए. एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है एजुकेशन लाइफ का. ठीक है, एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ. आई एम अफ्रेड दैट द डे इज नॉट वेरी फार अवे when the cumulative result of this failure will culminate in our unprecedented violence. ठीक है, कहते हैं कि आज तो हम दखल अंदाज कर ही रहे, ओके, टू फॉर एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स, बट दिस कैन लीड टू ग्रेट डैमेज इन फ्यूचर. अब हाँ, हो तो रहा है. वी कैन सी बिकॉज ऑफ एजुकेशन
we are saying that there are many very small childrens like teenagers, ठीक है, जो होते हैं वो बच्चे क्राइम करते हैं यार, मतलब वो बच्चे क्राइम कर रहे, कैन यू इमेजिन, दे आर सो स्मॉल. इवन education is the thing which will set the standard to live, the way they think, the discipline. Okay, these are the small things that education teach you, and that will be suicidal for humankind. Right, security hope can only be restored through education. ठीक है, तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हारी सिक्योरिटी जो सारी स्टोर होती है ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला. ठीक है, ये कहते हैं कि मैंने मेरी बच्ची को सिर्फ मलाला करना बंद कर दिया है, मैं उसे कहता हूँ बच्चा, मेरी बच्ची मलाला. ठीक है, सो डॉटर मलाला. So my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats, and Shazia and the daughter from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. ठीक है, तो कहते हैं कि मैंने ना ये जो बच्ची है, the daughter of this Kailash Satyarthi, they are actually reaching to the zenith when it comes to peace, security for the children. Okay, the solution are emerging, but this solution cannot be found in the deliberation in conference alone, so they lie in small group and local organization. तो कहते हैं कि ये अभी इमर्ज हो रहे, they are coming up slowly and slowly they are coming up with this kind of good ideas, right? So what he is trying to say is, it's not the work done by alone person. Okay, alone, अकेले नहीं होता है. This comes again with the group, with a good idea of a group. Clear? Next, they lie in small group and local organization and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, they unrecognized and unknown to the world, the solution are with them. ठीक है, so solution are with them. ऐसे कौन कह रहा है? कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं. ओके, सो व्हाट द लास्ट पैरा ट्राइड टू से, वो कहता है कि दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम्स एवरी डे, हु आर फेसिंग, ठीक है, हु आर चैलेंजिंग. फेसिंग, कॉन्फ्रंटिंग का मतलब है फेसिंग. ओके, मैंने यही कहा था अभी, कॉन्फ्रंटिंग का मतलब क्या है? फेसिंग. who are facing, sir, confronting every day. Okay, confronting, so it's confronting, it's confronting. Okay, confront, who are confronting with the problems every day, even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown. Okay, तो कहते हैं कि ये जो स्मॉल ग्रुप में रह जाते हैं ये, और ये जो इंडिविजुअल जो फेस करते हैं प्रॉब्लम सारे हर दिन, वो इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अननोन टू द वर्ल्ड, द सोल्यूशन आर विद देम. ओके, सो ये जो छोटे छोटे ग्रुप आते हैं, ये अगर प्रॉब्लम्स में रहे ना रहे, इन्हें एक नॉलेज रहता है, एक द वे टू रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, दे हैव आइडिया अबाउट दिस थिंग. ठीक है, सो व्हाट राइटर इज ट्राइंग टू से कि ये जो बच्चे पीछे पड़ गए मीन्स लाइफ में पीछे पड़े. ओके, लाइफ के जो रेस में, हु आर नॉट एक्चुअली इन द रेस, हु आर एक्चुअली लिविंग फॉर, हु आर एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर फ्रीडम एटलीस्ट. ठीक है, खाना पीना उसके लिए भी प्रॉब्लम होता है. फॉर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो बेचारे से मासूम से बच्चे, उनके लिए हमारे सर कैलाश सत्यार्थी जी काम कर रहे हैं. ठीक है, सो इन्होंने ब्रेक किया है कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने, इन्होंने मीन्स देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी हु आर अगेन डूइंग दिस वर्क. सी टुडे ही इज़ गेटिंग नोबल पीस प्राइज़ 2014 में मिला है इनको. ठीक है, पूरे 10 साल बाद, राइट, 2014 हो गया, 2024 चल रहा है. सो कंप्लीट 10 years बैक इन्हें ये अवार्ड मिला था नोबल पीस प्राइज़ का. मस्ट अप्रिशिएट फॉर द वर्क ही डिड. ओके,
So we have done with part 1 in this video. What we are going to do is we'll distribute this chapter into part 1 and part 2. Okay, we'll distribute this thing in part 1 and part 2. Once we complete with this thing, then we'll go to then we'll jump on second part, second chapter. In this video we'll stop here till part 1, and in further video we'll continue with part 2 of this chapter. Okay, and we have done with many like videos and lectures, like we have completed part 1 और unit 1, unit 2 का भी ये हो ही जाएगा. फिलहाल 2.5 चल रही है, 2.6 तक है. We'll complete this, and once we complete this, what we are going to do is jump on third unit. But before jumping on third unit or second unit directly, it's a request to you to please first watch the first and second 2.1, 2, 3 and 4 video, and then jump to next one. Okay, so this would be the series in which we are going to complete the 10th all the chapters of 10th. Clear? तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, लेट्स मार्च में हम वो राइटर ये कह रहा है कि हम एक साथ मिलकर जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लेकर जाएंगे. उन्होंने आज भी एक सीट वैकेंट रखी है उन बच्चों के लिए जो उनकी लाइफ में खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम्स में है. द वन हु हैव नॉट गॉट द फ्रीडम एट लीस्ट. ओके, फ्रीडम. ओके, तो इन लोगों के लिए मैंने एक चेयर जो है वो वैकेंट रखी है. ओके, so this is how the chapter is trying to explain or trying to express the seriousness of the issues which are there across. Okay, और रही बात हमारी जो भी प्रॉब्लम हम लाइफ में फेस करते हैं, thing would be always look this problem as an opportunity that you are going to learn something new, instead of cursing at why it happened with me, the thing took place in this manner, that manner. Okay, fine. So what you do is start reading the chapters, whichever chapters we have done. If you have any doubts, switch to the videos, see what exactly the chapter is trying to say, poem is trying to say, and then again start working on it. Clear? So we have completed till at least 8-9 chapters. हाँ, 8-9 chapters तो आराम से हो गए. तो what you do is 10 तक तो हो ही गए होगे. So what you do is go and see the videos which we have done for the prior, and then clear it on. Okay, so what we'll do, we'll stop here. In next video we'll do part 2. If you have any doubt related to this topic, please message down in the comment section so that I'll clear your doubt personally. And at the same time, if you're not getting any of the point, again the same thing, you have to comment down over there, so that I would get an idea what all things have to clear with it. Clear? And stay tuned till the next time. God bless you. Thank you.